Assalamualaikum. Beta, in this video lecture, I will continue the lecture on Mendelian inheritance, part 2. Okay, so continuing with this particular portion, that is autosomal loci, here you will understand beta a couple of things. Let's see that a phenotype is beta said to be recessive when a phenotype is said to be recessive in case of homozygotes, hemizygotes, or compound heterozygotes, okay, and never in heterozygotes. So what do I mean by this? That if let's suppose this capital R refers to dominant gene and small r refers to recessive gene, okay, फिनोटाइप बेटा रिसेसिव कब अपीयर होगा? अब मैंने कुछ 5 एग्जांपल्स बनाई हैं. दिस लेट्स सपोज नंबर 1 2 3 4 5. व्हाट इज दिस कंडीशन बेटा? दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट? एंड ओके, इफ आई आस्क यू बेटा दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या इसका फिनोटाइप रिसेसिव होगा? नो. ओके, व्हाट टाइप ऑफ द व्हाट इज दिस कंडीशन बेटा? दिस इज heterozygous dominant. One is dominant, one is recessive, so this is heterozygous dominant. अच्छा, इस केस में जो फिनोटाइप होगा वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा? इसमें भी जो फिनोटाइप होगा बेटा वो डोमिनेंट होगा. ठीक है, तो हमें चाहिए रिसेसिव फिनोटाइप. तो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट हो तो भी रिसेसिव फिनोटाइप नहीं आएगा, और अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो तो भी फिनोटाइप रिसेसिव नहीं आएगा. तो फिर कब बेटा जो फिनोटाइप है वो रिसेसिव आएगा? जब आप होमोजाइगस रिसेसिव हो, या हेमीजाइगस रिसेसिव हो, या आप कंपाउंड हेट्रोजाइगोट हो. मतलब ये कि दोनों रिसेसिव हैं लेकिन दोनों में जो पैटर्न ऑफ म्यूटेशन है वो डिफरेंट है. मैंने कंपाउंड हेट्रोजाइगोट डिस्कस किया है बेटा पीछे. सो these three are the conditions in which the phenotype is going to be these three are the conditions in which the phenotype is going to be recessive. Okay, and what are these three conditions? One is homozygous recessive, and one is hemizygous recessive, and one is compound heterozygote. That both are recessive, but the pattern of mutation is different in this and in this. Okay, yeah, this is how the recessive phenotype appears. But when you come to the dominant phenotype, the phenotype is expressed dominant in what conditions? When you are homozygous dominant, heterozygous dominant, or compound heterozygous for dominant gene. Okay, you are not going to show a dominant phenotype in these conditions. So what should be the condition to express the dominant phenotype? ये तो बेटा बहुत आसान सी बात है. डोमिनेंट फिनोटाइप कब एक्सप्रेस होगा? व्हेन यू आर होमोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है, नंबर 1 यू कैन सी this homozygous dominant or heterozygous dominant. This is heterozygous dominant. Okay, this is heterozygous dominant, or compound heterozygote. This is these both are dominant genes, but because the pattern of mutation is different in this and this, so therefore this is called compound heterozygote. So these three are the conditions where you can have a dominant phenotype. Okay, yeah, but previously I told you autosomal loci, when the phenotype becomes recessive and the when phenotype becomes dominant in case of autosomal loci. But now X-linked loci. Look beta, we can say that for X-linked disorders, the condition which is expressed only in hemizygotes and never in heterozygotes has traditionally been referred as X-linked recessive. अब हम इसको आसान करने के लिए बेटा ये कह सकते हैं कि रिसेसिव फिनोटाइप एक्स लिंक
किन कंडीशंस में एक्सप्रेस हो सकता है, और डोमिनेंट फिनोटाइप एक्स लिंक्ड जीन्स में कब एक्सप्रेस होता है। जैसे वहाँ पे हमने बात वही सेम है बेटा, लेकिन वहाँ पे एक्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम से, यहाँ पे एक्स लिंक क्रोमोसोम से, सेक्स क्रोमोसोम से, दैट इज द लास्ट पेयर इन द मेल एंड फीमेल। यू कैन सी दिस इज द फीमेल सेक्स क्रोमोसोम. If I see here, you can see this is XX, the last pair of sex chromosome, last pair, okay? And okay, this is the last pair, but you see here, when do X-linked chromosomes give you phenotype recessive, and when do sex chromosome give you dominant phenotype? When on your sex chromosomes there is, homozygous recessive genes present, homozygous recessives or hemizygous recessive, okay, then the phenotype is going to be recessive. And if on your sex chromosome there may be heterozygous dominant, hemizygous dominant or compound heterozygote, the phenotype is going to be dominant beta. Okay, so what are the conditions in your sex chromosomes in which you are going to have a recessive phenotype, and what conditions on your sex chromosomes in which you are going to have the dominant phenotype? The phenotype is going to be recessive when on your sex chromosomes you have both recessive copies, homozygous recessive, ठीक है, या फिर बेटा हेमीजाइगस हो, एक recessive जीन मौजूद हो. So in both cases the phenotype will be recessive, okay? And it is going to be dominant when you have one copy of dominant gene and one copy of the recessive gene, that is the heterozygous condition. And if you are hemizygous, but hemizygous for dominant gene, in this case you will also develop the dominant phenotype. Or this can be the homozygous dominant or heterozygous compound heterozygote. In both the cases you will develop the X-linked dominant phenotype, okay? And if we talk about the male sex chromosomes, then obviously the last pair is XY. So in what conditions you will develop the recessive phenotype, and what conditions you will develop the dominant phenotype? It is recessive phenotype when male is homozygous. Obviously male cannot be homozygous recessive, because it is only the X which carry the gene and Y does not carry the gene. So if a male receives only one copy of the recessive gene, the phenotype will be recessive, and only one copy of the dominant gene, so he will be developing the dominant phenotype, okay? So X लिंक बेटा recessive condition कब देखने को मिलेगी? X लिंक recessive. X linked recessive in case of hemizygotes. You can see this is hemizygote. You can see this is hemizygote. चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में जो हेमीजाइगस कंडीशन है, ये देखिए यहाँ पे भी हेमीजाइगस कंडीशन, सिर्फ एक क्रोमोसोम पे मौजूद है जीन, और यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम पे जीन मौजूद है, दैट इज द हेमीजाइगस कंडीशन. दोनों के अंदर फिनोटाइप विल बी रेसेसिव, ओके? अच्छा, हेमीजाइगस के अलावा हेट्रोजाइगोट्स के अंदर कभी भी जो फिनोटाइप होगा बेटा वो रेसेसिव नहीं होगा, ठीक है? आप देखें, लेट सपोज ये हेट्रोजाइगोट है तो फिनोटाइप डोमिनेंट हुआ, ओके? सो when in case of X-linked loci the phenotype is going to be recessive when you are hemizygous if you are male, hemizygous if you are female, or even homozygous recessive, okay? And when you talk about the dominant condition, when your phenotype is going to be dominant beta, when there is heterozygous condition और हेमीजाइगस कंडीशन. देखो यहाँ पे बेटा हेमीजाइगस डोमिनेंट तो फिनोटाइप डोमिनेंट, यहाँ पे भी हेमीजाइगस डोमिनेंट हो सकता था कुछ इस तरीके से, हेमीजाइगस डोमिनेंट, लुक आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ओके? दिस इज हेमीजाइगस डोमिनेंट. तो हेमीजाइगोट्स के अंदर डोमिनेंट फिनोटाइप देखने को मिल सकता है, और हेट्रोजाइगोट्स में भी. यू कैन सी दिस इज द हेट्रोजाइगोट, one copy is dominant, one is recessive, so this is the heterozygous. So two things, if you are heterozygote, this, if you are a hemizygote, this, your phenotype will be dominant, okay? In men, in case of men, you cannot see the heterozygosity because only X carry the gene, Y does not. So you will see hemizygous dominant and the phenotype will be dominant surely, okay? Right. Now let's continue beta with the autosomal pattern of the Mendelian inheritance. Beta, I can say, just a second. Yeah.
Autosomal pattern of the Mendelian inheritance, the autosomal recessive inheritance and the autosomal dominant inheritance. Autosomal recessive and the autosomal dominant inheritance. For autosomal recessive inheritance, two mutant alleles and no wild alleles. If let's suppose this is a pair of chromosome, if this is okay, if a chromosome, let's suppose, then this is the gene, this is also the gene, these two should be mutant. ओके दोनों को म्यूटेंट होना चाहिए, दोनों को रिसेसिव होना चाहिए, तभी जाके ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न क्रिएट होगा. अगर एक म्यूटेंट हुआ और एक नॉर्मल वाइल्ड टाइप अलील हुआ तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी autosomal recessive. For autosomal recessive inheritance, two mutant alleles should be present and no wild allele should be there. Okay, and the mutant allele responsible generally reduces or eliminates the function of the gene product. और जो बेटा जो mutant allele मौजूद है यहाँ पे, अगर इसमें कुछ इस तरीके की म्यूटेशन हो कि इसका फंक्शन लॉस हो जाए तो इसको हम लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कहते हैं. ठीक है, अगर इस जीन में म्यूटेशन की वजह से इस जीन का जो काम है वो रुक जाए तो उस म्यूटेशन को लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कहेंगे ना. ठीक है, and then is the autosomal dominant inheritance. And by the way, don't forget beta, more than half of all known Mendelian disorders are autosomal dominant. More than half are autosomal dominant. This can be a very good question for your exam purpose, that more than half are the autosomal dominant traits. Okay, how much common these are? Look, adult polycystic kidney disease, it is an autosomal dominant disorder. Every 1% in 1000 in the USA developed this disease. Okay, so 1 in 1000 is still very much common. Okay, and some other examples are there as well, right? I hope you are clear with this beta. You are clear with this beta. Now let's continue with few more okay, so two terms. One is the pure dominant inheritance, and one is incompletely dominant inheritance. Okay, incompletely dominant. Pure dominance, I hope beta you are clear with this. This is very basic science, basic clinical genetics, very basic genetics. Pure dominant, जब एक जीन पूरा डोमिनेंट हो और दूसरा बिल्कुल भी काम ना करे. अब इसकी मैं प्योर डोमिनेंट को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, या ओके, इस पे एक डोमिनेंट जीन मौजूद है, एक रिसेसिव जीन मौजूद है, इस पे एक डोमिनेंट जीन मौजूद है, दूसरा भी डोमिनेंट जीन मौजूद है. तो चाहे ये सिनारियो हो चाहे ये सिनारियो हो, दोनों में देयर विल बी कंप्लीट डोमिनेंस. ओके, in this case capital D will be completely dominant over the small d. In this case there are both capital D, so there will be complete dominance. And the very good example of the complete dominance is the Huntington disease. It is a pure dominant disease because the disease is generally similar in the nature and the severity of the symptoms in the heterozygotes and the homozygotes. चाहे heterozygous हो चाहे homozygous हो, दोनों में डिजीज़ की सीवियरिटी सेम होती है. चाहे हेट्रोजाइगस हो तो भी फुली डोमिनेंस फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है, चाहे होमोजाइगस हो तो भी बेटा फुली डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है. एंड इन कंपैरिजन टू दिस complete or pure dominance, there is incomplete dominance, in which what happens, one gene is not completely dominant over another gene, so both are expressed. And a very good example of incomplete dominant inheritance is achondroplasia. Achondroplasia, which involves what gene? Fibroblast growth factor receptor gene. Okay, FGFR gene. So achondroplasia, in which what happens, people are short-heighted. Okay, short height, and obviously there is enlarged head, and some other conditions you will come to see in case of achondroplasia. So the best example for the pure dominant inheritance is the Huntington disease, and the best example for the incomplete dominance is achondroplasia. If you are still confused with the pure dominance and incomplete dominance, you can go back and check out my previous video. You will get the better concepts. Okay, concept I have to add here is X-linked recessive inheritance. X-linked recessive inheritance beta is completely restricted to
males, because if okay, this is, you know, a sex chromosome pair of the male and this is the sex chromosome pair of female, obviously. So a male requires only one recessive gene to produce the disease. However, female require two, so to develop the disease. So X-linked recessive mutation is expressed phenotypically in all males who receive it. एक जीन मिल गया, you will be developing the disease, सिर्फ एक recessive gene. But in female, you only develop the disease when you are homozygous recessive. And if you receive one recessive gene and one dominant gene or the normal gene, you are not going to come up with a disease. Okay, so therefore we say that X-linked recessive inheritance is generally restricted to the males. Okay, you are clear with this concept, beta? I will then come up with, okay, one more very important term, beta, that is manifesting heterozygote. Again, this can be very example for your exam purpose. I'm like trying to deliver everything that can help you cope with your basics and the exam purpose. Manifesting heterozygote. Okay, I have drawn here, by the way. You can see this is a homologous pair of chromosomes. This is the dominant gene, capital D, and this is the recessive gene. What do you think, what should happen in this scenario? What should be the phenotype? Everybody must be thinking that in this case the phenotype should be dominant, because there is one dominant gene. Because there is one dominant gene, so the phenotype should be dominant. But here comes the term called manifesting heterozygote, in which what happens, the dominant gene gets failed to completely mask the effect of this one recessive gene. So dominant allele does not completely mask the effect of this recessive allele, does not completely mask the effect of this recessive allele. So this recessive allele produces some little kind of recessive effects. Okay, that is the manifesting heterozygotes. So manifesting heterozygotes, more commonly an affected female represents a carrier of a recessive X-linked allele. आप फ़र्ज़ करें ये एक फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है और वो लेट सपोज हीमोफीलिया के लिए कैरियर है. एक नॉर्मल डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है. हीमोफीलिया डेवलप कराने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? दोनों रिसेसिव जीन्स चाहिए फीमेल को. बट विद दिस यू कैन नॉट डेवलप हीमोफीलिया. लेकिन अगर कुछ यूँ हो जाए कि ये एक जीन कंप्लीटली डोमिनेंट ना हो इसके ऊपर और ये कुछ हद तक एक्सप्रेस करने लगे, तो यू विल कम अप विद द डिजीज़, but obviously mild. Okay, because it is still working. So this is the manifesting heterozygote. Affecting female represents a carrier of a recessive X-linked allele. Look here, you are a carrier of the X-linked recessive allele, but still you are a carrier. Normally carrier females do not come up with the disease, but if you come up with the phenotypic expression, if you come up with the disease despite of being carrier, then it is called manifesting heterozygote. Normally, if you are carrier, that means you are having one abnormal gene and the one normal gene, you do not come up with the disease, you do not develop hemophilia. But in some very rare cases, what happens, that if still you are carrier for a gene, then what happens, the concept of the manifesting heterozygote comes, that this gene which was normally completely dominant over this now becomes mildly dominant over this. As a result, this gene produces some effects, and as a result you come up with the disease, beta. That is obviously mild, but it is still there. This is the concept of manifesting heterozygote, beta. Now comes one more concept, that is X-linked dominant inheritance. If I talk about X-linked dominant inheritance, तो बेटा इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको यहाँ से क्विकली ओके. X-linked phenotype, beta, it can be described. One very important thing, beta, that has to be mentioned here is that X-linked dominant inheritance can readily be distinguished from the autosomal dominant inheritance by the lack of male to male transmission. आप फ़र्ज़ करें कि ये एक मेल है बेटा और उसका ये
क्रोमोसोम नंबर 6 का होमोलोगस पेयर है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे, ठीक है। और इस पे एक डोमिनेंट जीन मौजूद है और यहाँ पे भी फर्ज करें डोमिनेंट जीन मौजूद है। और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये लास्ट पेयर है, 23 पेयर है, सेक्स क्रोमोसोम है मेल का, ओके। अच्छा ठीक, ये लेट सपोज इफ इट इज़ क्रोमोसोम 6, इट इज़ क्रोमोसोम नंबर 7, ओके। दिस इज क्रोमोसोम 6, दिस इज क्रोमोसोम 7, having dominant gene just for understanding purpose, and this is the last pair, chromosome number 20, pair number 23, okay. uh, just for understanding, if this is having a dominant gene, okay, if this male if this male if this male having a sex chromosome pair with a dominant gene on X, if he marries with, let's suppose, a girl, obviously having, let's suppose, whatever genes we are not concerned with, तो बेटा इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, तो उन ऑफ स्प्रिंग्स में से जो डॉटर होगी, उस डॉटर को जो फादर है बेटा, दिस ही कैन शेयर हिज एक्स क्रोमोसोम विथ हिज डॉटर, ठीक है। और या एंड इफ इट इज सन ही विल शेयर हिज वाई क्रोमोसोम, ओके। अगर बेटा, क्योंकि फीमेल से तो एक्स क्रोमोसोम ही आएगा सिर्फ, एंड इफ द मेल शेयर्स द एक्स क्रोमोसोम, इट विल ऑब्वियसली बी daughter. And if the female shares, if female can only share X, obviously, and if the male, that is father, shares the Y chromosome, he will be son, okay. So let me now explain you the same thing in some easy words. If let's suppose this is the father and you got this mother, अगर इनका offspring बेटा देखो, what a mother can only share with you X chromosome. Now it's up to father. अगर फादर ने अपना एक्स शेयर कर दिया तो इट विल बी डॉटर, और अगर फादर ने अपना वाई शेयर कर दिया तो इट विल बी सन। अगेन इसको यहाँ पे बनाते हैं। इफ लेट्स सपोज दिस इज फादर, दिस इज मदर कैन ओनली शेयर एक्स क्रोमोसोम, फादर कैन शेयर नाउ वाई, सो दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज सन, ऑब्वियसली, ओके। तो मुझे बताएं बेटा, अगर फादर को एक्स लिंक डोमिनेंट जीन मौजूद हो किसी भी सर्टेन डिजीज़ का, तो क्या ये फादर में जो एक्स लिंक डोमिनेंट जीन है, क्या ये फादर टू सन ट्रांसमिशन हो सकती है, फादर टू सन इनहेरिट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा एक्स अगर फादर ने इनहेरिट का एक्स अगर ट्रांसमिट हुआ तो वो तो डॉटर बन जाएगी, ठीक है, वो तो डॉटर बन जाएगी। हाँ, डॉटर में फादर का ये एक्स लिंक डोमिनेंट जीन आ जाएगा, लेकिन जो एक्स लिंक डोमिनेंट जीन है वो कभी भी फादर टू सन नहीं जाता, क्योंकि अगर फादर ने अपना एक्स शेयर कर दिया और मदर की तरफ से तो सिर्फ एक्स ही आ सकता है, तो वो तो डॉटर बन जाएगी ना। और सन बनाने के लिए तो बेटा मदर कैन शेयर ओनली एक्स एंड फादर कैन गिव यू वाई, सो इट विल बी सन एक्स वाई। तो मुझे बताएं, क्या फादर टू सन कभी भी एक्स लिंक डोमिनेंट जीन आ सकते हैं? नहीं आ सकते, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट तो आ सकते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो शेयर होते हैं। सो नाउ यू कैन रीड द सेम थिंग हियर। एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस कैन readily be distinguished from the autosomal dominant inheritance by the lack of male to male transmission. फादर टू सन ट्रांसमिशन नहीं हो सकती एक्स लिंक डोमिनेंट जीन की, और ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स की ट्रांसमिशन हो सकती है, इनहेरिटेंस हो सकती है, ठीक है। वाई देयर इज़ लैक ऑफ मेल टू मेल ट्रांसमिशन ऑफ द एक्स लिंक डोमिनेंट जीन्स? क्योंकि बेटा बिकॉज मेल फादर ट्रांसमिट वाई क्रोमोसोम टू हिज सन, नॉट द एक्स क्रोमोसोम टू देयर सन्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस बेटा, ओके। Yeah, one more concept beta, other than the nuclear genes, there may be some problems with the mitochondrial genome. Okay, some pedigrees of the inherited diseases, they do not show the pattern of the typical Mendelian inheritance. There may be some problems, some mutations in the mitochondrial genome, okay. And remember beta, the mitochondrial genome, mitochondrial diseases
are strictly of maternal inheritance because it is mother who shares with you mitochondria. Okay, so yeah, it is a strictly maternal inheritance. Number of diseases can be there. A very important is mentioned here. If I show you, Leber hereditary optic neuropathy. It is a form of the adult onset blindness caused by defect in the mitochondrial DNA. और बेटा ये defect कहाँ से आया mitochondrial DNA में? Obviously from the maternal side. Okay, so that's all about the Mendelian inheritance beta, divided in part 2 and part 1 video. Hope you are clear with the concepts. If you have any problem regarding this, you can ask me anytime, anywhere. I have got thousands of way to explain whatever I can beta. ठीक है? Thank you so much. Class dismissed.